हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ए सेल हैज टू टर्मिनल्स. सेल रो दीटा टर्मिनल्स, गोटे है पॉजिटिव टर्मिनल, अदर है नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल टा हाई पोटेंशियल एवं नेगेटिव टर्मिनल होची लो पोटेंशियल. पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस सिंबल दियंती एवं नेगेटिव टर्मिनल को माइनस सिंबल दियंती. एवं सेल रो ईएमएफ मेजर करा जाए गोटे हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर द्वारा. सेल टा रिप्रेजेंट करा जाए दीटा वर्टिकल लाइंस. ये बड़ वर्टिकल लाइन होची पॉजिटिव टर्मिनल एवं छोट वर्टिकल लाइन होची नेगेटिव टर्मिनल. हम गोटे रेजिस्टर नबा जार रेजिस्टेंस हला आर. आर रो गोटे एंड ए कनेक्ट कराइछि पॉजिटिव टर्मिनल सहित एवं अदर एंड बी कनेक्ट कराइछि नेगेटिव टर्मिनल सहित एवं के हला की. जेतेबेले स्विच और की के टा क्लोज हबो सर्किट रे करंट फ्लो हबो. ई करंट होची आई. मानेकर ए कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस होची नेग्लिजिबल एवं आर टा होची हमर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टर ये जो रेजिस्टर ए और बी मध्य गोटे वोल्ट मीटर कनेक्ट कले वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मेजर करा जिवो एवं सीरीज कनेक्शन करा जाय गोटे एमीटर. ए सर्किट रे गोटे एमीटर कनेक्ट कले से करंट मेजर करिवो एवं गोटे गिवन रेजिस्टर रे हमें वोल्टेज बट पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी बिटवीन ए एंड बी मध्य मेजर करा जिवो. पोटेंशियल डिफरेंस v एवं एमीटर द्वारा करंट मेजर करा जिवो i. वर्तमान हमें रेजिस्टर को वेरी करबा चेंज करबा आ गोटे रेजिस्टर नबा नॉन रेजिस्टर नबा एवं पुनी पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी मध्य v मेजर करबा एवं एमीटर द्वारा करंट मेजर करा i. एमती किछि रेजिस्टर्स चेंज करबा एवं करेस्पोंडिंग रेजिस्टर्स काई हमें पोटेंशियल डिफरेंस v एवं करंट i मेजर करिया एवं हमें इथु नोट करबा e एवं पोटेंशियल डिफरेंस v तार डिफरेंस टा करंट सहित प्रोपोर्शनल. तमाने ईएमएफ हला e माइनस पोटेंशियल डिफरेंस हला v. इटा प्रोपोर्शनल टू करंट i हबो. e माइनस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट i इन द सर्किट. और e माइनस v is equal to i into r, where r is a constant that depends on the cell. Where r is a constant that depends on the cell. It is called the internal resistance of the cell. It is called the internal resistance of the cell. Internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the cell to the flow of charges through it. Internal resistance can be expressed as R is equal to E minus V by I. According to Ohm's law, potential difference across two ends of the resistor having resistance R is given by V. V is equal to I into R. Now combining equation 1 and 3. Combining equations 1 and 3, E minus IR is equal to I into small r, or E is equal to I into R plus R. Here R plus R is capital R is the external resistance and small r is the internal resistance. So this is the total resistance of the circuit. Thus EMF in the circuit is equal to the product of the current and total resistance. So from this expression we can find the current in the circuit. I is equal to E by R plus R. So this is the
expression for current in the circuit. Now let us discuss some special case. Case 1. If the internal resistance R of the cell is 0, R is 0, then E is equal to I into R. I into R, that is equal to V. So a cell with 0 internal resistance is called an ideal cell. जो सेल रो इंटरनल रेजिस्टेंस टा 0 सेही सेल को आइडियल सेल कहंती. किंतु सबु सेल रो किछि ना किछि इंटरनल रेजिस्टेंस थाए. सेल को रिप्रेजेंट करा जाय सिंबल गोटे वर्टिकल लाइन आ गोटे स्मॉल लाइन. एवं जदि इंटरनल रेजिस्टेंस यार रहिबो तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एरकम रिप्रेजेंट करा जाय. किंबा वर्टिकल लाइन भितरी इंटरनल रेजिस्टेंस देखा जाय एवं गोटे स्मॉल टर्मिनल एरकम एक्सप्रेस करा जाय. तो एटा होची गोटे सेल रो रिप्रेजेंटेशन. Now second case, case 2, when I equal to 0, I equal to 0 केतले होबे जतले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टा इनफिनिटी होतो, हाई रेजिस्टेंस हेबो, से समय रे R करंट फ्लो बनी I equal to 0 होबो. तो हम जानछे E minus V equal to IR. So this implies E minus V equal to 0 implies V equal to E होबो. तो ये होची ओपन सर्किट कंडीशन. ओपन सर्किट कंडीशन. थर्ड केस, V is equal to E minus IR. Here V is called the terminal potential difference or terminal voltage. Terminal potential difference or terminal voltage. Terminal voltage. So this equation implies that terminal voltage is less than EMF by IR. V is less than E. Here IR is called potential drop. IR is called potential drop. Potential drop or voltage drop within the cell. Voltage drop within the cell. Then fourth case, when R equal to 0, so V equal to 0 because V is equal to IR. So this is the condition when the two terminals of the cell are connected by a resistance-less conducting wire. When the two terminals of the cell are connected with a conducting wire, so this is the conducting wire. So through the conducting wire, potential difference is 0. So this cell is said to be short circuited. The cell is short circuited. तामाने सेल रो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सहित जदि गोटे कंडक्टिंग वायर टे जोड़ी दिया जाए सेल टा शॉर्ट सर्किट हो जाए एवं एतरे करंट आसी वर्तमान आसीबो IS is equal to E by R. Here IS is called the short circuit current. Short circuit current. एवं ए करंट बहुत लार्ज सर्किट रे जते पार्ट्स थिबो से गोटा सब हीट हेगी डैमेज हो जाए. तो शॉर्ट सर्किट करंट सर्किट रा टेम्परेचर राइज करे. So this is all about internal resistance of a cell. Thank you.